Hello students, today we study about the various classes of fungi. We have already studied the class Phycomycetes, which is also known as algal fungi. Now we study about the next class Ascomycetes. This group of fungi commonly known as sac fungi. The ascomycetes are mostly multicellular, like the penicillium, or rarely unicellular, like yeast, Saccharomyces cerevisiae. They are saprophytic, means take food from dead and decaying material, decomposers, parasitic, or coprophilous, which grow on dung. Mycelium is branched and septate. The asexual spores are conidia, which are produced exogenously on the special mycelium, conidiophores. इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होते हैं जो कोनिडियोफोर्स के ऊपर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं. कोनिडिया आर Conidia on germination produce mycelium. Conidia जर्मिनेट होकर माइसेलियम प्रोड्यूस करते हैं. The sexual spores of this group are called ascospores, which are produced endogenously in sac fungi. Sac-like structure called asci, or its singular is ascus. इसके सेक्सुअल स्पोर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस के अंदर बनते हैं और उन्हें एस्कोस्पोर्स कहते हैं. These asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascospores. और इसके जो फ्रूटिंग बॉडी हैं वो एक डिफरेंट वे में अरेंज होती हैं और उनको हम एस्कोकार्प्स कहते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ आर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स परपुरिया, न्यूरोस्पोरा. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Many members like morels and truffles are edible and considered delicious. इसके कुछ मेंबर जैसे मोरेल्स और ट्रफल्स ये भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं
और काफ़ी न्यूट्रिशियस है। नाउ वी स्टडी Basidiomycetes. Basidiomycetes इस ग्रुप के मेंबर्स को हम कॉमनली मशरूम कहते हैं या फिर ब्रैक्ट फंजाई और पफ, वो इस ग्रुप में आते हैं। दे ग्रो इन सॉयल, on logs and tree stumps, and in living plant bodies as parasites, जैसे रस्ट एंड स्मट्स। ये बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप की फंजाई से ही उत्पन्न होते हैं। The mycelium is branched and septate. Asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fermentation is common. Sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or phenotype. सेक्स ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन टू वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स जो अलग अलग स्ट्रेन की होती हैं वो आपस में फ्यूज होती हैं, जिसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर is dikaryotic, which ultimately give rise to basidium. और फ्यूजन के बाद इसमें डाइकैरियोटिक स्टेज आती है और अल्टीमेटली ये बेसिडियम प्रोड्यूस करती है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम, प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। उसके बाद इसके न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, जिसे कैरियोगैमी कहते हैं, और मियोसिस के द्वारा बेसिडियम में 4 स्पोर्स बनते हैं, जिन्हें बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, और ये बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम के ऊपर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। The basidia arranged in fruiting bodies called basidiocarps. Some common members are agaricus, यानी कि मशरूम, अस्टिलेगो which causes smut, Puccinia which causes rust disease. Now we study Deuteromycetes. These fungi commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phase of these fungi are known.
When sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes. They rightly belong to. It is also possible that the asexual and vegetative stages have been given one name and placed under deuteromycetes. इस ग्रुप को फंजाई इम्परफेक्ट इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें केवल एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ही इसकी ज्ञात थी, लेकिन बाद में जब उनकी सेक्सुअल स्टेज का डिस्कवर्ड हुई तो उन्हें उनकी जो रिलेटेड क्लासेस थी उसके अंदर क्लासिफाई किया. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes. Once perfect stage of members of deuteromycetes were discovered, they were often moved to the ascomycetes and basomycetes. जब इनकी सेक्सुअल स्टेज के मेंबर्स का पता लगा तो उन्हें उससे रिलेटेड या तो एस्कोमाइसिटीज में कब क्लासिफाई किया या उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया गया. द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाई asexual spores known as conidia. ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं और उन एसेक्सुअल स्पोर्स को हम कोनिडिया कहते हैं. द माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड. सम मेंबर्स आर saprophyte or parasites, while a large number of them are decomposer of litter and help in mineral cycles. इसके कुछ मेंबर सैप्रोफाइट है तो कुछ पैरासाइट है, जबकि बहुत बड़ी संख्या में डिकम्पोजर है जो लीटर फॉल को डिकम्पोज करते हैं और मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करते हैं. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर एल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा. Now to study the kingdom Plantae. Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms. इस ग्रुप में सभी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और जनरली हम इन्हें प्लांट्स कहते हैं. ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रोफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड पैरासिटिक प्लांट. इसमें से कुछ प्लांट वो पार्शियली हेटेरोट्रोफिक होते हैं जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट या फिर पैरासिटिक. Bladderwort and Venus flytrap are examples of insectivorous plants, and Cuscuta is the parasitic plant. Plant cells have an eukaryotic structure
with prominent chloroplasts and cell wall, mainly made up of cellulose. And we will study about the eukaryotic cell structure in detail in 8th chapter. Plenty includes algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, and fungi. The life cycle of plants has two distinct phases, the diploid saprophytic and the haploid gametophytic, that alternate with each other. The lengths of haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on other vary among different groups in plants, and this phenomenon is called as alternation of generation. The plantae kingdom we will study in detail in chapter 3.